What are olfactory indicators? Give some examples. Okay. Suraj, you can answer if you want. You can unmute yourself. I am giving you permission. Sir, olfactory indicators are those indicators which depend with which they are mixed. If they are mixed with acids or base, for example, onion, olive oil, etc. Not olive oil. Olfactory, clove oil. Olfactory indicators are the indicators which helps to identify acids or bases by change in dash. Change in what? Change in smell. Very good. Change in smell. महक. किसका नाम है महक हमारे क्लास में? वेरी गुड. ये तो एक आंसर हो गया, इसको लिख लेना. एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या क्या है? ऑनियन, वैनिला एंड क्लोव ऑयल. Indicates base by changing its smell. Have you written this down? आपने लिख लिया इसको? जो लिख लिया हैंड रेज करना. ठीक है. जो नहीं लिखे वो वीडियो देखना. वीडियो में भी मैंने सेम चीज को अच्छे से पढ़ाया है, दिखा दिखा के एकदम से. मैं अलग अलग तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि किसी भी तरीके से कुछ छूट ना जाए. नेक्स्ट इज एसिड प्लस टर्मरिक. टर्मरिक का मतलब हल्दी पाउडर या हल्दी. क्या होगा? और बेस प्लस टर्मरिक क्या होगा? Who will give me the answer? Write in the chat box. फर्स्ट वाला बताओ. फर्स्ट वाला कोई चेंज होगा क्या इसमें? एसिड प्लस टर्मरिक कोई चेंज होगा? नो चेंज. नो चेंज. Rashi is saying no change. Priyanshi is saying no change. Very good. So it will be no change. And here what will happen? Here yellow color will change to reddish brown. Correct. Reddish brown. Correct.
इसलिए देखना जिस बर्तन में ऑयल रहता है और हल्दी रहता है, टर्मरिक, जिस बर्तन में हल्दी और टर्मरिक रहता है, जब उसमें हम सोप डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एसिड के साथ क्या कलर देगा और बेस के साथ क्या कलर देगा? कौन बताएगा? बोलो बोलो। ओके, एसिड के साथ ये देगा रेड या पिंकिश रेड। ठीक है, विथ एसिड इट विल गिव पिंकिश रेड एंड with base it will give yellow color. Similarly, phenolphthalein, phenolphthalein के साथ एसिड कौन सा कलर देगा और बेस कौन सा कलर देगा? With acid no change, correct. And with base it will give a pink color. याद हो गया अच्छे से? अच्छे से याद हो गया? यस और नो, यस और नो? अगर याद हो गया तो थम्स अप दो, रेज हैंड करो। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये एक्टिविटी 2.3 भी कर लिया हमने, ये वाला टॉपिक करते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करने का एक तरीका है। ये टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला है? सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं या कोई भी एसिड डाल सकते हैं, वी कैन पुट एनी एसिड।
और साथ में जिंक मेटल डाला है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे H2SO4 और जिंक, ये बनता है Z10SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो बनता है ये वाटर में लेस सॉल्यूबल है, बहुत ज्यादा सॉल्यूबल नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि वाटर के अंदर रहता नहीं है। तो जैसे ही इसके अंदर वाटर में पास होता है तो बाहर ये बबल्स बनकर निकलने लगता है। और अगर हमने इस वाटर को सोप सॉल्यूशन बना दिया तो जब ये बबल निकलेगा तो इस बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ रहेगा। और जैसे ही हम इसके पास बर्निंग कैंडल लाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बनाएगा। ठीक है, और ब्लूइश फ्लेम क्रिएट करेगा, ब्लूइश फ्लेम, और ब्रस्ट करेगा, एक्सप्लोड करेगा। और साउंड कैसा आएगा? पॉप साउंड, एक पॉप साउंड आएगा। ठीक है, what I have is just a little bit of zinc. We're going to pour a little bit into my Erlenmeyer flask. That's good enough. And after that, I'm going to close my lid. And right now, for this hydrochloric acid, I have a pre-diluted 3 molar solution of hydrochloric acid. So I think you want to use at least 3 molar or 6 molar. If you have more diluted versions of about 0.1 or 1 molar, you will still have a reaction, but it's really, really slow. So I would recommend at least a 3 molar. So I'm going to pour some of my hydrochloric acid in here. And once I'm done pouring, this is going to carry out a single displacement reaction, meaning that hydrogen gas is going to be produced. So after that, I'm going to put this inverted funnel in, put it into my test tube. And since hydrogen gas is lighter than air, it will actually go to the top and it will not sink down. Okay, and that's how we collect it. So right now I have the zinc in this Erlenmeyer flask, and all I need to do is to pour this hydrochloric acid in. So you might be wondering, how much of this hydrochloric acid do I need to put in? I would say about 40 to 50 milliliters. You just have to pour enough to have a reaction to produce that hydrogen gas from the single displacement reaction. So I'm just going to pour about here, and once I finish pouring, this is going to start bubbling because that's going to be our reaction. And I'm going to shake it a little bit, put my inverted funnel into my test tube, and keep shaking. And you can see that there is a lot of bubbles being produced. So I'm just going to let this reaction occur for a couple minutes just to get enough hydrogen gas into this test tube. So right now what's happening is that in single displacement reaction, the hydrogen gas is actually being produced, and it's going to go in and store in this test tube. Why it's storing in this test tube again is that because hydrogen gas is actually lighter than air, so it's not going to sink down. So it's going to be around here. It's not going to flow up because this test tube is going to capture it. And now we're just going to have to wait, and to test the hydrogen gas, we're going to light a splint. And since hydrogen gas is flammable, when we put it in, a lit splint into the test tube, we should hear a popping noise.
But after a couple minutes, you can see that the hydrogen gas is collected in a test tube. The test tube is a little bit cloudy, so we have to kind of light this on fire to test if there's hydrogen gas in the test tube. So there's my flame. I'm going to put it in. Oh, so we can hear that little high pitch. That's the presence of hydrogen gas being burned inside this test tube. And that's your single displacement reaction. तो मजा आया? देखिए किस प्रकार से हाइड्रोजन बर्न करता है। मजा आया तो थम्स अप करो, हैंड्स अप करो। रिस्पॉन्ड नहीं करते भाई, रिस्पॉन्ड किया करो, है ना। Now give me the answer that good. Now acid reacts with metal to form dash gas. Kultaj is saying salt and hydrogen. So we are only asking gas. So we'll write hydrogen gas. Hydrogen gas is collected in dash test tube. Straight or inverted? No, not straight, inverted. In straight, how will it be? अगर हम स्ट्रेट टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ रहता है, नीचे की तरफ नहीं जाता, बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर। इसलिए इसे हम इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ऊपर की तरफ रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड होगा या स्ट्रेट होगा? इन्वर्टेड, उल्टा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। सिमिलरली hydrogen gas is dash than air, heavier or lighter? heavier or lighter? हाइड्रोजन गैस जो है वो एयर से, मिक्सचर ऑफ गैस से लाइटर है या हेवियर है? लाइटर है। Hydrogen gas is hardly soluble in water. True or false? True. Hydrogen gas in soap water
forms bubble containing dash majorly. बबल के अंदर क्या रहता है? बबल के अंदर क्या रहता है? बबल के अंदर क्या रहेगा? हाइड्रोजन गैस ही रहेगा. Hydrogen burns with oxygen when both are brought near flame. The type of combustion taking place is spontaneous, rapid, slow, or explosive. Choose the right word. Okay, Kultaj is saying explosive. So explosive is right answer, slow is wrong answer, rapid is wrong answer, spontaneous is wrong answer. Although H2 is inflammable and explodes, but first, it is not dangerous in small scale. Second, it cannot be used as a fuel. What will be the answer? Because it produces water which absorbs the heat. Second, fuel should be undergoing spontaneous combustion. Not explosive. जो सामान तुरंत जल जाता है उसको हम फ्यूल नहीं बना सकते, इसलिए हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह कंप्लीटली नहीं यूज कर सकते. हाँ, पेट्रोल में हम 5% हाइड्रोजन जरूर मिलाते हैं. ठीक है. How was the class? If you like the class, then give me marks. Out of 10 कितने मार्क्स दोगे आप मुझे? In the chat room, give me marks out of 10. अगर आप आज का क्लास इंटरेस्टिंग था, फैक्टफुल था, तो आप मुझे 10 में कितने मार्क्स देंगे? Kultaj is giving 10 out of 10. बाकी सब कंजूसी कर रहे हैं. सुमित गोस्वामी 10 out of 10. सीनू 10 out of 10. अंजलि 10 out of 10. और कोई कंजूसी कर रहे हैं, मुझे मार्क्स नहीं दे रहे हैं ना. चलो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा. होप यू एंजॉयड द क्लास.